हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपनकर जीएस एजुकेटर प्रभु होप आपण समस्ते बहुत बेटर करथुबे केमति कोन अछन समस्ते टिके ऑनलाइन पळे आसतु देन हम स्टार्ट करिवा आज रा इंपोर्टेंट क्लास हरा प्रसाद गुड इवनिंग देवाशीष गुड इवनिंग प्रियंका गुड इवनिंग प्रियंका आज रो डे केमति रहला विश्वजीत हेलो प्रियंका रा आज जॉब लाइफ रो फर्स्ट डे थिला ना के समस्त ऑनलाइन पळे आसतु हम स्टार्ट करिवा तो चलो धीरे धीरे पिला आसी गलेनी 20 जन पिला ऑनलाइन हे गलेनी राजेश प्रणाम तो हमर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन आज रा हमें डिस्कशन करबा एमसीक्यू प्लस थ्योरी बेस्ट विशेष प्रियंका यस नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट ऑलवेज डू योर बेस्ट मने रखो जहां भी करूछ तमर बेस्ट ही करो जस्ट बिकॉज समवन डज नॉट गिव यू क्रेडिट ताम तुमको जने क्रेडिट दो कि न दो बट यू डू योर बेस्ट बिकॉज टू सर्वाइव यू हैव टू बी द बेस्ट बंचिया पे हेले तुमको कोन बेस्ट ही हबाक पड़िबो ना सेकंड तो तम पे गोटे चांस ही नो सेकंड तो गोटे तम पे ऑप्शन ही नो तो प्रिपेयर करो आ तमरो सबटु बेस्ट ही दबाकू चेष्टा करो तो चलो फास्ट को जीवा फास्ट रे आज मु किछरा क्वेश्चंस तम पई आके आछि तो क्वेश्चन डिस्कशन पर जेंति हम डिस्कशन करथले क्वेश्चन लास्ट क्लास में मते डिस्कशन करथले ए क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन कला परे हमें जीवा थ्योरी क्लास आज हमें थ्योरी क्लास रे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करबा जेंति तमे लास्ट क्लासेस रे पचातलो सर व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट रावटवाड़ी सिस्टम मालवारी सिस्टम सब गुडी को हमें डिस्कशन करबा तो फर्स्ट क्वेश्चन तम मानक आगे रे आफ्टर एक्वायरिंग द रॉयल चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी कुड रॉयल चार्टर मतलब जो तांकर रानी जो चार्टर जेते बेले पाइले से माने बिजनेस करिया पई जा फल के चार्टर एक्ट्स गुडी को तमे देखुतला सेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को कोन हेल्पफुल करतला यस पिनाकी प्रणाम फास्ट आंसर आसी गलानी शिवानंद वेरी गुड शिवानंद फास्ट आंसर देइचंदी इट हेल्प देम टू वेंचर अक्रॉस द ओशन ठीक अछि buy goods at a cheap price and sell at higher price ठको काम करथले देवाशीष वेरी गुड could carry their business to European countries ठीक अछि त राइट आंसर तमरा होची कोन ऑल ऑफ द अबव एटा तमरा अराउंड 1813 रे टॉप हेइतला जेतबे नेपोलियन तमरा फ्रांस रे जेतबे आस्तले स्टेट्समैन बा विजयी हला परे मने अछि ना नै सेहि लागि अलगा कंपनी गुडी को मध्ये आसीले ईस्ट इंडिया कंपनी ना कंपटीशन बढ़ी गला तो मोनोपोली भी एंड हो गला at the charter act 1813 except tea and trade relationship with china question number 2 रो राइट आंसर बता रे पिले yes शिवानंद वेरी गुड शिवानंद फास्ट आंसर ऑलरेडी दे दिचंदी हु अमंग द ब्रिटिश गवर्नर जनरल abolished the slavery of india हमें डिस्कशन करतले तांका टाइम रे गोटे मेन चिंस थिला लॉर्ड एलन ब्रॉड very important question yes सुरेश हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा मैच द फॉलोइंग एटा तमरो ओटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने पिले वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी ओपीएससी ए लेवल रो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ए बड़ी क्वेश्चन बहुत भल पान से माने पके को मैच द फॉलोइंग
फॉलोइंग को मैच करके कुह इजी वन अच्छी वारेन हास्टिंग आम डिस्कशन करते मेघमाला गुड इवनिंग किशोर हेलो क्षीरोद प्रणाम 3 नंबर बी नायर शिवानंद देवाशीष वेरी गुड राइट आंसर देवाशीष क्षीरोद देइचंती यस चर्चित गुड इवनिंग और वारेन हास्टिंग यार डिस्कशन करतले ना वारेन हास्टिंग एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम मने पडुची ना टिके रिकॉल करो व्हाट हैपेंड इन द डुअल सिस्टम तमर जो टैक्स दउतले से माने जो माने तापर ब्रिटिशर्स माने मुगल माननकू पैसा दउतले डोनेट करथले तो ए सब गुडी का से बंद कर देथिले Cornwallis we had already discussed the permanent settlement of Bengal permanent settlement of Bengal किए करतले Cornwallis जॉन सर भी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल रे भी थिले पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जोटा को कुआ जाए से सेथरे थिले लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस तो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बट हु इज द पायनर ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स वारेन हास्टिंग सब्सिडियरी नुरे सब्सिडियरी तो कुआडे तमे पागला बढिया होचो खिरोद प्रियंका हेलो सुभाषिनी प्रणाम चिन्मयी प्रणाम बुझी पारछ ना नहीं सबिता गगन ज्योति फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स सब्सिडियरी अलायंस रे फास्ट ऑफ annexation under the doctrine of lapse by Lord Dalhousie had already discussed this question काली तुमको होमवर्क देथिल ना पढिबो को मस्तिया रे कोटा कोटा को annexation करा दितला अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मने पडुची ना नहीं सिपुन प्रणाम सरोजिनी प्रणाम यस गगन कल तुम होमवर्क देथिली केवल फास्ट कहि देथिली ए तो देखिले जणा पड़ी जाउची फास्ट annexation कोटा आइतला तमरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे देखिले जणा पड़ी जाउची यस शिवानंद वेरी गुड सतारा वाज द फास्टेस्ट जोटा कि तमरा कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे annexation हेतला तो फास्ट तो एक नंबर ए ही अछि ना बहुत इजी ऑप्शन अछि एटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यस शिवानंद वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 5 who among the following governor abolished the slavery of India अरे क्वेश्चन टा को रिपीट कर देती रे क्वेश्चन टा को रिपीट कर देती रे क्वेश्चन नंबर 5 यस प्रियंका सुनील आसी जीव रे क्वेश्चन टा रिपीट हे गला ना बुझी पारछ ना बुझी पारनो रिपीट हे गला अच्छा मु तुमको आ गोटे क्वेश्चन पचारुची अच्छा वेरी वेरी इंपोर्टेंट केउ एक्ट रे केउ एक्ट पास हला परे तमरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल मध्ये बनिथिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों एक्ट इजी वन रेगुलेटिंग एक्ट ना पीट्स इंडिया एक्ट ना चार्टर एक्ट
शिवानंद राइट आंसर दो ट्राई करछंती 50 पिला ऑनलाइन अछ 50 पिला गोटे ही पिला आंसर दबो शिवानंद देवासी स्पीड्स इंडिया एक्ट कंफ्यूज हे गेलनी दी जण yes शिवानंद पीट एक्ट 1984 सर एटा 1784 रे 1984 नो टाइपिंग मिस्टेक yes झरना गुड इवनिंग बोर्ड मेंबर ऑफ 6 मेंबर्स yes शिवानंद वेरी गुड तो एमती हिस्ट्री पढ़िबा हमें तो आज आम डिस्कशन करबा कोन सब गुडी को तो तमरा मने अछि आज आम तीनटा पॉलिसी को मेनली तमरा डिस्कशन करबी जेमति तमरा लास्ट क्लास रे कहि देथिली परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इजी वन आम ऑलरेडी आगुरु डिस्कशन करिचे परमानेंट सेटलमेंट आम आगुरु करचे ना नहीं मने पडुची ना नहीं रे पिले परमानेंट सेटलमेंट तो ओके परमानेंट सेटलमेंट किए करिथिले यस वेरी गुड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट तांकर जो चारटा तमर थिला गोटे थिला तमर जुडिशियल रिफॉर्म सिविल सर्विस रिफॉर्म पुलिस रिफॉर्म तमर लैंड रिफॉर्म जोटा कि तमर कहछ परमानेंट सेटलमेंट जो टाइम रे से छाड़ी की जाइतले अराउंड 1793 they introduced the permanent settlement बुझियला the permanent settlement under रे केउ जगह आस्तला some part of Tamil Nadu बनारस आउ तमर बिहार बेंगल ओडिशा एंड प्रेजेंट बांग्लादेश व्हाई यस राउतरी सब हम डिस्कशन करबा महालवारी राउतरी सब डिस्कशन करबा बनारस व्हाई बिकॉज एट दैट टाइम द ब्रिटिशर्स आर कोन को जगह को तमर कैप्चर करनैतले बंगाल तमर बिहार ओडिशा आउ तमर प्रेजेंट डे बांग्लादेश तो एई जगह रे तमर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को इंट्रोड्यूस कराउतला व्हिच इज 19% ऑफ ब्रिटिश इंडियन एरिया What are the system in permanent settlement? A peasant will be there. Peasant to asiba jamidar to asiba state. The jodi tamara peasant, if the peasant is unable to give or the pay the tax, tale kono land tamara palebo. So ei peasant tamara land को बंचेबा पाई की कोन करिवो ना मनी लेंडर्स को टू मनी आनुतला with a high interest rate. तो हाई इंटरेस्ट रेट आणुतला याडे सुजी मध्ये पानतला ए समस्त को हालो तो तार लैंड जिबार डर मध्ये रहउतला बुझियला आ एथरे केते परसेंट थिला जमीदार पाखे रहउतला 1/11 व्हिच इज अराउंड 9% स्टेट पाखे रहउतला 10/11 व्हिच इज अराउंड 91% एट दैट टाइम सनसेट लॉ मध्ये पास हेतला एको होउजी आउ एको होबन देखो सनसेट लॉ आस्तला जदी सूर्यास्त पूर्वरो जदी आइदर पीजेंट किंबा जमीदार से जदी टैक्स जदी स्टेट को न देई परिबे ताले से तांकर अधिकार हरई बसिबे पीजेंट इज नॉट द ओनर जमीदार वाज द owner of the land in case of peasant and jamidar and in case of jamidar and state is the owner of the land तो ए जगह रे प्रॉब्लम कोन होतला सपोज ए जमीदार वन से टिके ट्राइबल एरिया को जायनी तार इंटरेस्ट न थाए एबे ठीक अछि सुप्रिया बुझियला ना नहीं देखो ए जगह रे जमीदार इज नॉट इंटरेस्टेड तो सी कोन करिवो आ गोटे जमीदार को अपॉइंटमेंट करिवो ये इंटरेस्टेड नहीं तो आ गोटे जमीदार को अपॉइंटमेंट करिवो सो एटा को हमें कोन कहउतले चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स एई जगह तमर कोन होतला absence of landlordism मने पकाओ हमें ए दीटा को डिस्कशन करिछि मेन प्रॉब्लम चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड द सेकंड पॉइंट इज
absence of landlordism. तो परमानेंट सेटलमेंट को हमें पूरा क्लियरली डिस्कशन मध्य लास्ट क्लास रे करिचे तार हमें से राउटवारी सेटलमेंट रे कोन होतला it is introduced by राउटवारी settlement was introduced by Thomas Munro and Reed. Thomas Munro and Reed एमाने कोन राउटवारी सेटलमेंट को डिस्कशन करी एक सॉरी इंट्रोड्यूस करिथिले राउटवारी सेटलमेंट तमर केउ केउ जगह रे थिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट मद्रास सेंट्रल प्रोविंसेस सेंट्रल माने तमर जो मझिया मझी जगह जो तमर कोडा तुम कहि परियो नागपुर वगैरह कहि परियो बॉम्बे क्वेश्चन आसे रे पिला एमती भी तमरा पकई देथिबो कि बॉम्बे रे तमर केउ सेटलमेंट होय माने हेतला राउटवारी सेटलमेंट ना परमानेंट सेटलमेंट ना महालवारी सेटलमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो मद्रास सेंट्रल प्रोविंस एंड बॉम्बे दे आर कमिंग अंडर द राउटवारी सेटलमेंट डिस्कशन कर दबा अरे अरे आउट इसले हो ठीक अछि डिस्कशन कर दबा तो ई जगह तुम से ही अछि आर्गारियन पॉलिसी आज तुमको सकाळे ग्रुप रे शेयर कर देछि पीडीएफ देखिबो पीडीएफ तमरो मो ग्रुप रे शेयर कर देछि ए पीडीएफ पढिबो जहां हमें डिस्कशन कले परमानेंट सेटलमेंट रे पूरा डायरेक्ट से या अछि केमती 91% ईस्ट इंडिया कंपनी को जाउतला केमती कोन झगड़ा होतला ला तो ए जगह रे हमें डिस्कशन करि दबा पूरा पीडीएफ रे से ही लिखा अछि किछि तमर चेंजेस नै तो राउटवारी रे कोन होतला राउटवारी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड रीड एंड प्लेसेस कमिंग अंडर व्हाट मद्रास सेंट्रल प्रोविंस सुप्रिया चाली चितर सबुदिन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बॉम्बे another very very important question 51% of British Indian land coming under राउटवारी सिस्टम तो मैक्सिमम तमरा राउटवारी सेटलमेंट अंडर रे ही आसुतला तो ए राउटवारी सेटलमेंट रे कोन होतला परमानेंट सेटलमेंट रे हम कोन देखले पीजेंट जमीदार एंड स्टेट इन दिस पीजेंट ओ होउची किए ए होउची जने ऑफिशियल ऑफ ब्रिटेन बा गोटे जने ये होचन जने कोन ब्रिटिश ऑफिसर जने जेमती हम मान को चाकरी मिलुची हम मान कोन किछि काम पई दिया जाउची एवं ता प्रतिबदल रे हमको कोन सैलरी दउछन ये सेमती ए सैलरीड पर्सन तो ये गोटे सैलरीड पर्सन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये कोन करिवे ये पीजेंट टू कलेक्ट करिवे एवं पीजेंट टू कलेक्ट कला परे का को ट्रांसफर करिवे ये स्टेट को सो ओनरशिप कहा पाखे रहइबो पेजेंट पाखे रे द बेनिफिट ऑफ राउटवारी कोन थिला ओवर द परमानेंट सेटलमेंट एबे देखो परमानेंट सेटलमेंट रे तमर कोन होतला चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स जमीदार 1 जमीदार 2 जमीदार 3 एमती हमर चाली रहितला बट ए जो ऑफिशियल रहिला ऑफिशियल थोड़ी ना ता जगह रे आउ का को अपॉइंटमेंट कर दबो इट वाज ए इम्पॉसिबल थिंग सो ऑफिशियल माने तांको अंडर का को रखि पर नथले से माने ही टैक्स कलेक्शन करथले तो चेन ऑफ इंटरमीडिएट्स एंड द एब्सेंस ऑफ द लैंडलॉर्डिज्म द टू मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग अंडर उषाराणी साइंस एंड हिस्ट्री क्लास अच्छा मु पढाई दे डिस्कशन करबा उषाराणी सुप्रिया मेघमाला समस्त हम लास्ट को डिस्कशन करबा कोन क्लास करबा कोन नै तो परमानेंट सेटलमेंट दे आर एलिमिनेट इन द राउटवारी सेटलमेंट लास्ट रे कोन थला महालवारी सेटलमेंट वाज मेनली एट द पंजाब एरियाज पंजाब तमर जो रहिला नॉर्दर्न पार्ट रे महालवारी सेटलमेंट हु इंट्रोड्यूस्ड महालवारी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी मन रख हॉल्ट मैकेंजी अराउंड 30% ऑफ ब्रिटिश इंडियन लैंड वर कमिंग अंडर महालवारी सेटलमेंट तो महालवारी सेटलमेंट रे कोन होतला सेठी हमें देखले कोन पीजेडएस एठी आसिले कोन पीओ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड द स्टेट एठी कोन आसीबो सेही पीजेंट रहइबो पीजेंट दबो पी को एठी आसीबो स्टेट ये पी जने होची के पंचायत रा गोटे पर्सन जे को अपॉइंटेड थिबो
आकु कौन कहउतला लाम्बरदर्स लाम्बरदर कौन तम एमती गोटे टर्म कहउतला देखिबो माहलवारी सेटलमेंट रे सो इट इज peasant panchayat person and state very important so I hope तमरा जो डाउट तमरा क्लियर हे जाइथिबो वर्तमान actually all these settlements are similar kind of thing little bit of difference was there ए तमरा pdf रे से पूरा अच्छे राहतवारी settlement माहलवारी settlement देखो से कहूँ ब्रिटिश विलेज कम्युनिटी थ्रू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह राहत वाली सेटलमेंट रे कौन होतला ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट एटा भी तमरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबे हम आसीबा कोठी एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म very important educational and social reform तो आगे हमें डिस्कशन कर दबा एजुकेशनल रिफॉर्म्स जहा कहूची yes शिवानंद very good and thank you for sharing the valuable information बटा तमु कोइ नथली शिवानंद गोटे बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन शेयर करचंदी एबे हमें देखि दबा टिके एजुकेशनल ऊपर विल गो थ्रू द एजुकेशनल reforms very important for your upcoming examination जो माने OPSC रो एग्जाम दबो प्रिलिमिनरी क्लियर कला पर जतले मेंस को जीवो मेंस रे भी तमे ए बळी क्वेश्चन फेस करिवार चांसेस अछि मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश सॉरी इंग्लिश एजुकेशंस वुड्स डिस्पैच ए सब ऊपर क्वेश्चन आसे very important for your upcoming examination सो हमें फास्ट रू टिके डिस्कशन करि दबा टिके मने पकाओ चार्टर एक्ट 1813 जे कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया इट वाज द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू एन एंड एक्सेप्ट टू थिंग्स वन इज टी एंड द ट्रेड रिलेशनशिप विथ चाइना तमे एमती पढो देखिबो पूरा पानी भलिया मन रहि जिवो आउ कोन होतला 1813 रे टिके मने पकाओ हमें डिस्कशन करितले एजुकेशन पछरे ईस्ट इंडिया कंपनी EIC will spend 1 lakh rupees on the education on the development of the education and these 1 lakh rupees will be invested on the places where they are their hold तमन तांकर जो जगह रे शासन चली छि सेही जगह रे तांकू 1 लाख टंकार इन्वेस्टमेंट करिया को पड़िबो ऑन द एजुकेशन एटा हम डिस्कशन करिचे सो एही जगह रे अरे लक्षे न हाँ 1 लाख रुपीस यस शिवानंद 1835 रे कौन हैला एठी तमर गोटे इंपोर्टेंट व्हाट हैपेंड इन 1835 very important जदी एजुकेशन ऊपर तमर आसीबो 1813 1835 and 1854 so 1834 रे कौन हैला तमर सेते बेले हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम Lord William Bentinck, Governor General of India, first Governor General of India, Lord William Bentinck. So Bentinck का टाइम रे कोन गोटे हायर एजुकेशन ऊपर तमरा चेंजेस आनिया को चेष्टा करा गला बढ़िया रे बुझो एथरु 100% क्वेश्चन आसे हायर एजुकेशन ऊपर गोटे मीटिंग तमरा बसिला हाउ द हायर एजुकेशन कैन बी गिवन टू द इंडियंस वाज द मेन एम ऑफ दैट मीटिंग तो सेही गोटे मीटिंग बसिला तो एई जगह रे तमरा दी जण ग्रुप आसिले 1835 रे वन इज एंग्लोइस्ट and the another one is orientalist civil service examination Meghamala already introduced at the time of Cornwallis हमें डिस्कशन करिथिले बट एट दैट टाइम नो इंडियंस को अलाउ करा जाउ नथिला ओनली ब्रिटिशर्स माने ही दउतले व्हाट इज एंग्लोइस्ट यस
एंग्लिस्ट माने किए ए होचंदी सेही लोक जे की कहिले तमर इंग्लिश मॉडल रे एजुकेशन हबो व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश मॉडल द मॉडल फॉलोड एट द ब्रिटेन प्लस द मीडियम ऑफ द टीचिंग वाज आल्सो इन English model and English medium. Orientalist is further divided into two categories. One is classical, another is vernacular. Who was classical? They told that the model will be Indian model, and medium will be classical. What do you mean by classical medium? The mode of the education will be on Sanskrit, Hindi. Hindi is not a classical language. Sanskrit re tamara education daba pai kuha gala higher education. Mane rakhiba, it is purely for the higher education, not for the primary or the secondary education. Very very important. What do you mean by vernacular orientalist? Vernacular orientalist are those people who support the Indian model of education, but the language will be in vernacular. What do you mean by vernacular? Vernacular medium. Vernacular माने local. तमर ओडिया, बेंगली, तमर एई सब लैंग्वेज रे तमर दिया माने जे जो रीजन रो बिलोंग करूची ताकू जो हमर ओडिया मीडियम स्कूल, बिहारी मीडियम स्कूल, तमर मराठी मीडियम स्कूल, they are called vernacular. Another point was there which is very very important. These Anglists, who are the British model and the British medium supporter, they told that they will educate only 1% of selected Indians. Only 1% of selected Indians will get the education on English model and the English medium. The गोटे percent selected group ର people को कुहागला कि तमे तमको दिया जीवो इंग्लिश मॉडल एजुकेशन और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन. बुझी पारुछ एपर्यंत ना किछि डाउट? तो एई जगह कोन हला, एटा गोटे माइनॉरिटी हे गला. माइनॉरिटी हे गला. सो दिस is also known as the downward filtration theory. Downward filtration theory or the trickle down theory. Why downward theory or trickle down theory? Also known as Macaulay's minute. Who was the Macaulay? जेतबेले तमरा 33 रे एक्ट पास हला, आउ थरे तमरा गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर हेले, गोटे लॉ मेंबर को इंट्रोड्यूस कराइतला. सेही लॉ मेंबर होछथि मैकुले. हमें डिस्कशन करिचे. इंग्लिश वाज द मीडियम ऑफ एजुकेशन. यस. Downward filtration theory or trickle down theory, also it is known as Macaulay's minute. This meeting is known as Macaulay's minute. तो एई जगह रे कहला, एई सिलेक्टेड 1% इंडियन मानु को इंग्लिश रे एजुकेशन दियाबो आउ एमाने बाकी इंडियंस मानु को एजुकेट करैबे. बुझी पारछो ना नहीं? So where was the problem? अले एई जगह रे प्रॉब्लम कहला, देखो तमरा प्रॉब्लम होउची तमे जदी किछु गोट एजुकेशनल रिफॉर्म आणुच ताल सेटा तमे कोन छोट पिला को प्रथमे पढेबो ना. इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल. प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल ला हवार थिला, बट से माने को कोन कले डायरेक्ट हायर लेवल ले इंट्रोड्यूस करेले हायर एजुकेशन ने. सेकेंड वन कोन रिस्पांसिबिलिटी टू इंडियन, जो 1% मानो को कुहा गला कि जो 1% पीपल मानो को इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश मॉडल रे दिया हला, से माने कोन कले they were not interested for to teach the rest of the Indians. तो से माने अन्य इंडियन मानन को टीच करिया पे इंटरेस्टेड नथले. से माने सब माने आउ असल खुखा चूचा है कि खाली इंग्लिश कहले आसी कि दे बिकम द इंग्लिश पर्सन्स. आउ अन्य माने को कोन डोमिनेट करिया को चेष्टा कले. इंडिया नै कि से माने टिके प्रॉपर इंग्लिश एजुकेशन पाइला, से माने टिके इंग्लिश पीपल हे गले. तो सेटा हे गला प्रॉब्लम. तो टू ओवरकम दिस, another reform was there which is known as Wood's dispatch. Wood's president of board of control, जो board of control तुमको डिस्कशन मु कली के बे आस्तला 1784 Pitt's India Act. At that time, who was the governor general? Dalhousie, the longest service, the youngest governor general of India.
It is also known as the Magna Carta of Education. Magna Carta of Modern Indian Education. So जो problem तमर 1835 मैकुलेस मिनिट रे आसीतला ताको सब ओवरकम करे देले कोन एठी आ हायर लेवल रे एजुकेशन रहिलानी आ 1% लोक मानक पई भी रहिलानी in their education for masses not for special classes very important question तो बर्तमान समस्त को एजुकेशन मिलिबो not only 1% people सेकंड पॉइंट कोन थिला तमरा प्राइमरी आउ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज रे तमरा दिया जिवो प्राइमरी आउ सेकेंडरी जेमते हमें ओडिया मीडियम पिला माने ना एबे हमें जेमती सब पढुछु लाइक दैट हायर लेवल रे तमरा कोन आसीबो इंग्लिश इन हायर लेवल English will be there. Third point, technical colleges. मेघमाला कहूँ रो लास्ट को कहूँ इंग्लिश मॉडल इंग्लिश मीडियम भीतर कौन डिफरेंस टेक्निकल कॉलेजेस भी तमरा जो उड्स डिस्पैच रे फर्स्ट असला फास्ट टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडिया रूरकी जोटा की तमरा एबे हे एच कोन आईआईटी रूरकी अंडर द वाजपेयी गवर्नमेंट इतला एटा इट वाज द फास्ट टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंडिया फोर यूनिवर्सिटीज आसिला यूनिवर्सिटीज लाइक द लंडन यूनिवर्सिटी भली तमरा बॉम्बे माद्रास कलकत्ता पई की आसिला and the fifth one is teachers training teacher मानन को ट्रेनिंग दिया गला how to teach your children so what are the five main points of Woods dispatch maybe your question come education for masses not like the 1% which was earlier in the Macules minute second one is the secondary education will be on vernacular and the higher education will be on English technical college IIT Roorkee was the IIT to natla Roorkee engineering college was the first at that time universities like Bombay Madras Calcutta and the teachers are also getting the training program मेघमाला इंग्लिश मॉडल और इंग्लिश मीडियम भीतर कोन डिफरेंस मीडियम होची को माध्यम रे तमरा पढा जाउची माने ओडिया रे हो कि इंग्लिश रे हो मॉडल होची को टाइप रो सिलेबस बा को टाइप रो पाठ्य खसडा रे तमु पढा जाउची इंडियन मॉडल रे कि तमरा ब्रिटिश मॉडल रे दैट वाज द डिफरेंस बुझी पालो मेघमाला सो इट वाज द एजुकेशनल रिफॉर्म रे हमें जा डिस्कशन कले सब से या अछि 13 ए देखो एनुअल 1 लाख तमरा स्पेंड पई के आसिला जहा तमरा डिस्कशन करी छी सब उडी कछे मैकुलेस मिनिट तापर तमरा चार्ल्स वुड्स डिस्पैच देखो कलकत्ता बॉम्बे रे Madras रे तमरा यूनिवर्सिटी हला like the model of London University social policies was also important what are the social policies social law concern for the women तो women मानन को बहुत सेतबेले प्रॉब्लम करा होतला हमें जानले राजा राममोहन रॉय को विलियम बेंटिंग को टाइप रो जोटी की सतीर रेजोल्यूशन पास करा जाइतला विडो रिमेर तो सतीर रेजोल्यूशन इतला महिला मानन को चारि कांथ भीतर रखुतले तांको बहुत टॉर्चर मध्ये करा होतला छडा पॉलीगामी वगैरह मध्ये प्रैक्टिसेस मध्ये थिला ए सब को ओवरकम करा जैतला एट द टाइम ऑफ इंग्लिश फीमेल इन्फेंटिसाइड तो झियो जन्म गोटे बोझ बोली भाबी की ये शिवानंद वेरी गुड कौन मेघमाला ना कहचो बुझी पालनी स्टिल बुझी पालनी ओके विल डिस्कस तो फीमेल इन्फेंटिसाइड रे कोन तो झियो मान को बोझ भाबी की झियो जन्म होला परे ताको मारी दउतले सो दिस इविल प्रैक्टिस वाज आल्सो कम टू एन एंड आस्ते आस्ते विभिन्न प्रकार लॉ मध्ये पास करा गला विडो रिमैरेज एक्ट एक्चुअली एटा हिंदू मान पइतला हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट मध्ये तम कहि परिबो हु वाज द मेन लीडर ऑफ दैट ईश्वर चंद्र विद्यासागर फ्रॉम द इंडियन साइड तो जो सती तमर थिला से सती दाह को ये करिया पई तमरा एठी आसिला विडो रिमैरेज एक्ट 1854 जदि तमे सती पई के एनकरेज करूछो यू विल बी जेल
and the maximum rigorous imprisonment of the 10 year was the कौन थिला तमर सजा थिला जेटा कि तमे कहि परिबो ता छडा चाइल्ड मैरिज आगुर तमर जो बाल्य विवाह 10 वर्ष 12 वर्षर पिला को मध्ये बाल्य विवाह कर देउतले श्रद्धा एक्ट अनुसार ये सब बंद है कि 14 वर्ष आउ 1978 रे 18 वर्ष को एटा बढ़े दिया तापर पर्दा सिस्टम ए सब एग्नेस्ट रे तमरा मेनली ब्रिटिश टाइम रे तमरा ब्रिटिशर्स मानक टाइम रे यस यस विडो रिमैरेज एक्ट सती रेजोल्यूशन पास कराइतला विलियम बेंटिंग का टाइम रे विडो रिमैरेज एक्ट तमरा आस्तला डेलहाउसिंग का टाइम रे द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द वुमेन्स एंड देयर एजुकेशन कहया गले चलिबो ब्रिटिशर्स मानकू ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये शिवानंद सतीर होउचंती तमरा राजा राममोहन रॉय विडो रिमैरेज पैकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर होप तमे पीडीएफ देखि दबा एटा बुझी परिबो मेघमाला तुम बुझी पाइलोनी ओके विल डिस्कस इन टेलीग्राम हैला मु तुमको टेलीग्राम रे पर्सनली बुझे देबी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन English medium and English model. Have कहार किछि doubt anything regarding your study? I hope समस्त गोटे बहुत बड़े आइडिया पाइए थिबे any further doubt? हाँ मेघमाला मु स्टडी कथा कहनी मु कहल टेक्निकल कॉलेज आईआईटी रुड़की जो तमर प्रतिष्ठा करा गला ठीक कथा कहउछ वुड्स डिस्पैच अनुसार यूनिवर्सिटीज मध्ये आस्तला कोटी कोटी बॉम्बे मद्रास कलकत्ता रोल मॉडल किए थिला तार लंडन यूनिवर्सिटी या छोड़ा टीचर मानु को ट्रेनिंग दिया जायतला हाउ टू टीच योर स्टूडेंट्स आउ कार किछि डाउट एनी डाउट तो जो माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करना थी जल्दी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जानतु जार जा डाउट अछि दे कैन आस्क मी बेहिचक मते पचारंतु किछि प्रॉब्लम नाही I will definitely help you to solve your queries जा जा डाउट अछि मते पर्सनली पचारो डेफिनेटली क्वेरी सॉल्व करबा टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर जा any doubt you can ask me maximum preparation करंतु साथ रहंतु definitely get the success thank you to all of you